So under cloud के अंदर I wanted to start with a little discussion. How many people over here understand this term called modem or modem? Oh, इधर आए ना सर आप तो। नहीं सर, मॉडेम किसको पता है? 54 kbps किसको पता है? कोई भी पुराना बंदा नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। मॉडेम्स 54 kbps, इतना तो नहीं हो तुमको याद ही ना हो। सो 54 kbps किसको पता है? खड़े कर दे हाथ यार यूं करके यार। आई नो दैट, यू नो दैट। सो होता ये है कि इमेजिन आजकल की दुनिया में इफ यू टेक योर 4G अवे, राइट, and then take you to the world where you had 54 kbps of access of internet, right? So what will happen? Right? It's the same thing that we don't even remember. So you all the solutions that you're thinking about in your mind, they will all change, they will all be trash, right? Right. Could be many things, but I think important चीज़ ये है कि जैसे ही आप टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से वापस जाने की बात के बारे में सोचते हैं, तो होता ये है कि आपके सॉल्यूशंस की फॉर्मेट चेंज हो जाती है, राइट? सो एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये है कि व्हेन डू यू थिंक क्लाउड स्टार्टेड? एनी गेसेस? मोर गेसेस? क्लाउड कब से स्टार्ट हुआ, या क्लाउड की डिस्कशन कब से स्टार्ट हुई दुनिया के अंदर? 2000। और 2000 में किसके साथ स्टार्ट हुई? IBM। हिरोकू याद है किसी को? रैक स्पेस याद है किसी को? Was that not on cloud? You could make an email server out of whatever infrastructure that you were, getting from them or leasing from them or hiring from them or getting from them. हिरोकू याद है किसी को यहाँ पे? हिरोकू कितना पुराना है? ऊंचा बोले ना ताकि उधर भी आवाज आए। 90s समथिंग, राइट? ये 2000 की बात कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्लाउड हिरोको की फॉर्म के अंदर और रैक स्पेस की फॉर्म के अंदर, और इसी तरीके से आपने और मैंने मिलके 4 सर्वर लगा दिए उसकी फॉर्म के अंदर, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था हमेशा। व्हाट इज क्लाउड? आई मीन इट्स लाइक अ सेट ऑफ सर्विसेज रिमोट फ्रॉम यू एंड दैट यू आर एक्सेसिंग देम एंड यूटिलाइजिंग देम। दिस इज नथिंग मोर टू इट, राइट? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। So any definition of the cloud that fits the AWS and Azure and Alibaba and all of that also is fit for Heroku and Rackspace and all of that. Then came the gaming era. एक दफ़ा ज़माने में we were doing a project for an organization, and what they did was they changed their business process. They had sized their data center with 2 Oracle server and all of that, and Oracle rack and वो जो पूरा का पूरा उसका क्या बोलते हैं, लोड बैलेंसेस के साथ and all of that. As soon as they changed their business process to allow students to register on one day instead of whole week, ठीक है, वो सर्वर पूरा एक हफ्ता बंद रहा था, because there was no way they could bring in a new server, right? And there was no way they could scale at that moment to address a business change then and there. So इस चीज़ को भी याद रखना है आपने। And that's really, I mean, that really happened, that the whole server crashed, and it took them, all of these guys, whole week to recover from that situation. सिर्फ एक business process change किया। So that's very slow innovation, right? That's very slow speed of innovation. Imagine now going to 2008-9 games start हुई, एंड्रॉयड फोन्स के ऊपर, आईफोन्स फोन्स के ऊपर गेम्स would become popular and move from 6 users in parallel to 30 million, 2 million, 4 million users worldwide. So how were they scaling? How were they scaling their services? Cloud. So cloud तब भी exist कर रहा है, अब भी exist कर रहा है। होता यह है कि as the cloud was advancing,
the type of solutions that you could apply, you could innovate with, they started to change. So सबसे बड़ा जो experience change हुआ लोगों के लिए वो games के साथ हुआ. And I myself saw a company called Tapfish. I was working with that company. That became popular so much कि उसके मेरे ख्याल में कोई 31 million users थे. So we didn't have to write the code and the services and everything else to be able to support that game that moved from 6 users to 20-30 million people. Right? Overnight popular हो गई, एकदम चार्ट्स के ऊपर गई. अब आप सर्वर खरीदने जाते ऐसी गेम के लिए जो कि 6, 7, 8, 10 यूजर से मिलियंस ऑफ यूजर्स के ऊपर जा रही है, तो आपको तो मेरे ख्याल है कि तब तक आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी, यू वुड हैव ऑलरेडी लॉस्ट दैट, राइट? बिकॉज एक सर्वर को लाते फिर उसकी पहली बात यह है कि उसकी अप्रूवल लेते हैं उसकी बजट की, राइट? चंद $1 मिलियन के 6 से 30 मिलियन हो गए, कैपिटल इतना किसी के पास नहीं था. So pay as you go, and the cloud and services started to become very popular for all these new innovative companies. There was a company called Vangal. They used to put advertisements on your mobile phone. जब गेम खेल रहे होते तो advertisements आती हैं, right? So that company in 1 year moved from about 500 videos to I think 5 million or 500 million video ads that they were serving. So can any other thing apart from cloud has the ability to match that rate of scale? बिल्कुल भी नहीं है, possible ही नहीं है. Because I've myself seen data centers being established. Data center वो भी नहीं, tier 3 भी नहीं, tier 2 of a banking organization पूरा 1 साल हार्डवेयर एक्वायर करने में लगा था. ठीक है, सेटअप करने में 6 महीने लगे थे. और डीआर साइट तो उसी शहर के अंदर थी जहां पे वो ओरिजिनल डेटा सेंटर था. इसके बाद जलजला आता तो दोनों ही जाते, डीआर भी जाता और मेन सेंटर भी जाता. बट इमेजिन यू ट्राइंग टू डू दैट ऑन क्लाउड. सो आपका सोल्यूशन चेंज होता है. आप जैसे जैसे 54 गेप पीपीएस से निकलते जा रहे हैं ना आप, और क्लाउड की अवेलेबल सर्विसेज की तरफ चलते जा रहे हैं, आपका जो दिमाग के अंदर आपकी सोल्यूशनिंग की कैपेबिलिटी वो चेंज होती जा रही है. So you cannot think big. फिर 2012-11 के अंदर अच्छा प्राइवेट क्लाउड्स ऑन प्रेम भी एग्जिस्ट करते थे अराउंड दिस टाइम. यू गाइस नो दैट, राइट? यूक्लिप्टस कभी जाके देख लीजिएगा. और हाइपरवाइजर्स हैं इसके VMware के. यू कुड यूज दैट एंड क्रिएट एन इन हाउस क्लाउड. अगर 50 टीमें हैं, सबको 50 डब्बे देने की बजाय यू कुड क्रिएट सेपरेट मेमोरी स्पेसेस एंड ऑल ऑफ दैट एक्सेसेस एंड मेक दैट अवेलेबल टू दैम. और वो चेंज करते रहें और NAS ड्राइव्स को लगा लें और सारा कुछ करते रहें. सो यू कैन बिल्ड अ लिटिल बिट ऑफ हाई अवेलेबिलिटी ऑन द टेस्टिंग सर्वर्स एज वेल. अदरवाइज होता यह था कि डेटा सेंटर्स जो पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेज होते थे वो उसके अंदर वो बहुत सारे Pentium 4 जो है ना डब्बों के फॉर्म के अंदर ऊपर चल रहे होते थे. कभी चलते थे कभी नहीं चलते थे, वगैरह वगैरह वगैरह. चेंज दैट फ्रॉम वन रैक, यूक्लिप्टस और हाइपरवाइजर इसका VMware का, and now you can run time के ऊपर change accesses and levels and all of that and utilizations and get a flavor of a bit of a cloud. Solutions change हो रहे हैं continuously, right? So under the cloud we have always been under the cloud, not under the cloud जो एक इंडियन वो मिनिस्टर था जिसने कहा था कि वो क्लाउड सारा डेटा चोरी कर रहा है ऊपर से बैठ के. ठीक है, have you guys seen that? If not, then go and look for it and listen to that talk. It's very interesting. So under the cloud, the way you are thinking about solution is changing. फिर change आया उसके बाद big data के उसके साथ. Big data already exist करता था Elastic MapReduce Hadoop की फॉर्म के अंदर, उसकी फॉर्म के अंदर, ओपन सोर्स के अंदर, ऑन प्रेम. Big data is not because of the cloud. Cloud is because of big data. जब ability आ गई cloud के अंदर to be able to do all of that scaling, right? तो suddenly लोगों का interest पैदा हुआ कि now it is possible, rather than failing on Hadoop EMR solutions on-prem, people started to become successful EMR Hadoop solutions around big data on cloud. The first project that we signed in Pakistan was about 12 years back, 11 years back.
right? So the email was, fortunately and unfortunately, we have signed a project that is related to AWS, Redshift, and big data. Uski wajah thi, we didn't have the resources in Pakistan anywhere. We didn't have the resources and skill in the organization. From those 5 people, we grew to 300 people, and in a premier partnership eventually, which is a very big thing for any company in Pakistan, sitting in Pakistan and being able to do that. Hopefully we'll be able to do that for NetSol as well. So अब solutions दोबारा change हो गए, right? So analytics की capability change होने की वजह से, imagine an organization who's selling books, and they have published a book called Harry Potter, right? And their existing analytics systems could not predict the behavior of the buyers and trying to forecast that Harry Potter itni popular ho jayegi, it will become a #1 seller. And they do not have enough published books, and they do not have those published books placed in the right stores to be able to make money out of that one big hit. With big data analytics, consumer behavior, sources of data, and all of that information being loaded to AWS, now people started to think about utilizing the data in their benefit, right? They started to think about bringing in all the data that they have access to, and now they can process it because they have ability to quickly scale out to process all of the data and scale back in. अब पूरा का पूरा हार्डवेयर बना के नहीं रखना है. सो मच सो अभी इस वक्त एक कैपेबिलिटी आपको पता है कि यू हैव सुपर कंप्यूटिंग access available time based on AWS as well. So if you have an algorithm that requires a supercomputer could be used, you can hire that supercomputer. I mean, pay as you go basis ke upar. Now with that available on cloud to you, without you being requiring to invest capital in getting a supercomputer as an example, the solutions that you're thinking about automatically change, right? So इसी तरीके से जब एप्लीकेशन ने कहा, जब ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा सोचना शुरू किया कि अच्छा एक तो ये डेटा की साइड हो गई, देन देयर इज अ साइड वेयर दे आर सेइंग कि लेट्स बिल्ड एप्लीकेशंस दैट कैन आल्सो स्केल. स्केलिंग अब क्लाउड के डिफरेंट फॉर्मेट्स है. सबसे बेसिक फॉर्मेट है इन क्लाउड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, उसके ऊपर अपना सॉफ्टवेयर, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी सारी की सारी डिप्लॉयमेंट्स की, बट you can scale that, right? If you reserve all that environment that you need for a spike in utilization, फिर वो बहुत महंगा पड़ता है. So they came with a new solution which is modernizing to serverless, right? So with serverless, your applications now can scale to an endless amount. I mean, look at Daraz, what Daraz is doing. You all have that experience. Daraz is now AWS, so अगर वो flash sale करते हैं कोई, so number of users automatically increase कर देते हैं, which they cannot predict early on, right? If they cannot predict that early on, so any amount of spend on the hardware, the capital of hardware, and being ready for that spike would go wasted 90% of the time. That's an expensive proposition. Over here, if they have built an application on the new style of architecture around serverless technologies that they can quickly scale, right? So now lots of organizations, especially during the COVID period, where e-commerce took over, a lot of organizations, lot of new services start to coming in. People, airlift is an example during this time, move from a transportation service to home, last mile groceries delivery service, which is a specific niche in that area.